Okay, I guess now the audio is okay. So, hi everyone, welcome back to Geeks for Geeks and welcome to a new video. We are going to start a new project today, and this project is divided into three different classes. Okay, Sainath, I guess, and Arthav, I guess now I'm audible, right? Okay, so in the meanwhile, you guys can tell that how was your by Wizard coding tournament, and I will tell you that what we are going to create today. So basically, today we are going to create this page. Can you see the page on the screen? I hope that the screen is visible. So we are going to create this page, okay, where we are going to write about DC Comics. Students like the students I can remember that when I was small, the comics were very popular, and DC Comics were one of them. And yeah, we are going to create a page inspired from that. And here you are going to learn a lot of things, that how you can attach this text with this picture, and you can also learn how to make a nav bar. As you can see, if I'm on this page, if I'm clicking on this Superman versus Shazam, so I'm getting to this section, right? Again, if I'll click on this Red Hood Outlaw, so I will directly go on that section of the page. Okay, you're also going to learn about how you can create a header, a footer, how you can divide different sections. So that's okay. Aditya is saying, ma'am, all quiz right, but I have problem in problem solving. How to good at that? Basically, the only way of getting good at problem solving is by doing practice. Just start practicing as much as you can. I would also like you guys to know that I am going to start, like, from maybe from Monday or maybe from tomorrow, we are going to continue our problem solving series, where I come up daily with the two coding questions, two problems, and you like, we discuss about the problem को solve करने की approach, and then we write the code together. Okay, so I had multiple sessions before by Wizard coding tournament, which was yesterday, and next 26th of February again we are going to have the tournament. Okay, so I will be telling you about that tournament, and the links and everything will be shared with you as, like, maybe tomorrow or maybe day after, like on Monday. So we are going to resume with problem solving, and हम daily दो questions करेंगे. And if you want to improve your problem solving skill, you can basically join me in that, and daily you can solve those two problems, and you can also just go and problem solve more problems on Geeks for Geeks practice, GFG. You will go on GFG practice website. So GFG practice section. So GFG practice section में जाके you will go on problems, and when you will go on problems, and here difficulty में just select school. Once you will select school, you will automatically get all the school level questions. So यहाँ पे आप school के questions, सारे school level के सारे questions solve कर सकते हो. If you will go inside any question, यहाँ पे hint भी होती है. See, here is the hint. आप hint भी देख सकते हो, यहाँ पे हिंट होती है. एंड देन वी ऑल्सो हैव फुल सोल्यूशन, तो आप पूरा सोल्यूशन भी देख सकते हो. यू ऑल्सो हैव डाउट सपोर्ट, सो आप डाउट्स हो तो डाउट्स पूछ सकते हो. सबमिशन, अभी तक लाइक कोई सबमिशन मैंने नहीं किया, तो मैं करती तो यहाँ पे मेरा सबमिशन दिखता. सो यू कैन प्रैक्टिस थिंग्स फ्रॉम हियर. ओके, so I hope that this will help you, Aditya. Now let me take few more questions. Okay, Agam is saying link the button to the section tag. Yes, we are going to do that only. Rohan ma'am, yesterday all the quiz questions from C language. Yes, Rohan, I went through the questions yesterday after the tournament was done, and it was from the C section, because earlier in CBSE, like, we have seen that a lot of students had problem in solving the questions from C section, like C programming section. From next time, the tournament that is going to happen on 26th of February, we'll try and not involve any question which is language specific. Okay, अगर कोई output वाला question भी होगा, so we will write pseudo code for that. Okay. ओके आदित्य, टाइमिंग 5 to 6 उसकी होगी. प्लीज सब्सक्राइब टू गीक्स फॉर गीक्स स्कूल चैनल, एंड यू विल नो अबाउट द टाइमिंग. आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. 5 to 6 हमारी उसकी होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, एंड जो लाइव आज मैं 5 to 6 ले रही हूँ, ये 4 to 5 रहेगी, एज इट वॉज प्लान्ड. पहले व्हाट आई यूज टू डू वाज 4 to 5 आई यूज टू टेक
live on front-end development for beginners, and 5 to 6 I used to take live on problem solving. So it was like the schedule will remain same, 4 to 5 front-end development and 5 to 6 problem solving. Okay, so if you are coming first time to my class, I'll explain you. Otherwise, you know that how do we go ahead in this फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्लास. जो भी हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आई एक्सप्लेन एवरीथिंग विद अ पीपीटी. पीपीटी विल कंसिस्ट ऑफ व्हाट ऑल यू आर गोइंग टू लर्न. क्या क्या आप थ्योरी कंसेप्ट क्या होंगे, या लर्निंग कंसेप्ट आप कह सकते हो, कोडिंग कंसेप्ट्स क्या क्या आप नए सीखोगे, एंड क्या क्या आपको आना चाहिए. ओके, एंड देन वी विल इन द नेक्स्ट 2 सेशंस वी विल स्टार्ट विद, बेसिकली इसको 3 क्लास में इसीलिए डिवाइड किया बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग. यहाँ पे हम CSS की एक फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ेंगे. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. सो या ओके, सो इसी वजह से मैंने इस वाले प्रोजेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया बिकॉज इट इज़ अ लिटिल बिग प्रोजेक्ट एंड आई वांट यू गाइज टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द पीपीटी टुडे, एंड आज सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स कवर हो जाएंगे एंड वी विल सी द पेज दैट हाउ वी हैव मेड द पेज, एंड देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट द पेज, start coding for the page, okay, together. Okay, now let's see what all are the concepts that we are going to cover in this project, so you can understand from this that कौन कौन से concepts आपके लिए नए हैं. One more thing students, that I have attached a chat section में सबसे ऊपर मैंने पिन किया हुआ है एक फॉर्म, गूगल फॉर्म. अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग टूर्नामेंट, रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स, रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिगार्डिंग इम्प्रूविंग कोडिंग स्किल्स, आप उसमें अपना डाउट डाल सकते हो, अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हो. आस्क मी एनीथिंग फॉर्म के नाम से है वो, एंड आई विल सी द रिस्पॉन्सेज इन दैट फॉर्म एंड आई विल ट्राई एंड एड्रेस योर रिस्पॉन्सेज ओवर देयर. ठीक है, चैट में ऊपर लिंक पिन्ड है हमारा वो फॉर्म. ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट HTML layouts, which is header, footer and body में multiple sections, we have a side, we have a lot of things, so we are going to see all of that. Okay, then we'll see different layout techniques. We have multiple layout techniques, so we are going to see that. So basically इसमें हम 4 टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, which are CSS techniques. We use CSS for that and we are going to study about all of them in depth. Okay, next is tag side by side. So in the project you must have seen that हमारा कुछ written में चीज़ें थी, like there was a paragraph and then there was a picture, right, of that superhero. So how we can align? So basically that picture is inserted inside one tag and that whole paragraph is inside one tag. So how do we put these tags side by side and how do we manage कि सिर्फ 2 ही tag होने चाहिए side by side and next thing next line से होनी चाहिए. Okay, so we are going to learn that. Okay, next is navigating within the same page. So अभी जैसे मैंने आपको बताया था, जब मैं सुपरमैन वर्सेस शाज़म पे क्लिक कर रही थी तो मैं ऑटोमेटिकली उस सेक्शन पे चली जाती थी जहां उनके बारे में लिखा हुआ था, राइट. सो दैट इज कॉल्ड नेविगेटिंग within a web page. Okay, within a same web page. So we are going to learn how we can navigate within the same web page, and then we are going to also see that how we structure the content. If you will see the web page जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, you can see उसमें काफ़ी स्ट्रक्चरिंग है. ऊपर हेडर में एक पिक्चर है, उसके बाद हमारा नेविगेशन बार है. नेविगेशन बार में जितने भी हमारे बटन है वो सेंटर में है. देन उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि एक पैराग्राफ एंड देन उससे रिलेटेड पिक्चर, देन नेक्स्ट लाइन में एक पिक्चर है, देन मतलब बेसिकली alternative pictures and paragraphs placed हैं हर row में. So that is the structure that we have given. Okay, so we are going to see how we can structure the content within a web page. Next is illusion of navbar. We are going to create a sort of navbar. Next is floating image. तो आपने देखा कि वो जो paragraph था, paragraph if you remember, पैराग्राफ टैग या डिव टैग अपना पूरा स्पेस लेता है, राइट. इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि वो पूरा स्पेस लेता है, लाइक पूरा ब्लॉक ले लेता है वेब पेज में, बट वी हैव मैनेज टू पुट दैट एंड द पिक्चर ऑल्सो टुगेदर. ओके, इफ यू विल राइट एनीथिंग इन पैराग्राफ एंड उसके बाद आप पिक्चर अटैच करोगे, वो एक्चुअली पिक्चर ऐसे आएगी कि पहले पूरा पैराग्राफ आएगा, उसके नीचे पिक्चर आएगी. बट वी हैव यूज्ड अ फ्लोट प्रॉपर्टी इन दैट इज इन CSS. विद द हेल्प ऑफ दैट वो पिक्चर साइड में अलाइन हुई है. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इज एडिंग फुटर. आपने शायद पेज पे ध्यान से नहीं देखा होगा, पेज के सबसे एंड में हमने फुटर भी ऐड किया है.
Okay, now let's see all the coding concepts that you're going to learn. You're going to learn how to use header, nav, section, article, aside, and footer, all these tags. Next is you're going to learn CSS frameworks. Okay, there are there are multiple, so you are going to see that. You're going to see float property. What is a float property? You're going to see what are flex boxes and what is grid, how to get that. Okay, you're going to learn float property that I already told you. You are going to learn HTML. You are going to learn HTML bookmarks. You are going to learn how to implement rows and columns. You're going to learn how CSS clear property. We also have a clear property in CSS. You're going to learn that also. And button link style. So you are going to link the button with a section and you are going to style that button. So you are going to learn all that also. And we have this after selector. In CSS, we have a double colons and after selector. So you are going to also see what is the use of this property. Okay, now Aditya is asking in GFG we have C or C++ course. Yes, we do have C and C++ course in GFG, but I would say, Aditya, you can just go on Geeks for Geeks website, and there in the courses section you can find the course. But if in starting you want to learn the beginner level of these things, we do have multiple channels and multiple playlists too, so you can just go and learn from there also. Okay. Now let's see HTML layout. What is the HTML layout that I was talking about? Okay, HTML layout specifies a way in which a web page can arrange. So if you know that we have a web page, and inside any web page we have a header, then we have a nav bar. Here nav bar mein we have multiple buttons to navigate to that web page or to go on another web page, and यहाँ पे sign in button भी हो सकता है. So we have nav bar. Then we have multiple sections. These sections can be like this and this, and here we can have multiple 2 sections and one more section like this. These are all the body, and here we can have multiple sections, and last mein we have footer, right? Last mein we have footer. Okay, next is web page layout works with the arrangement of visual elements of an HTML document. So हम visually elements को कैसे place करते हैं, वही हमारा web page का layout होता है. For example, in the web page that I shown you previously, you have seen ऊपर header में एक image थी, then यहाँ पे कुछ buttons थे, right? यहाँ पे कुछ buttons थे, and then after that you have a certain amount of text written over here, and then यहाँ पे एक image थी, यहाँ पे एक img इमेज थी, राइट? एंड नेक्स्ट उस पर यहाँ पे एक इमेज थी, एंड देन यहाँ पे हमारा कंटेंट था, राइट? यहाँ पे हमारा टेक्स्ट था. सो जिस तरीके से हम अरेंज करते हैं सारे विजुअल एलिमेंट्स को अपने वेब पेज पे, वही हमारा वेब पेज का लेआउट हो जाता है. Okay, next is website often display content in multiple columns like magazine and newspaper. So here I just want to say that ऊपर nav bar में आपको 4 columns दिख रहे हैं, right? Then उसके बाद आपको 2 columns दिख रहे हैं. हर रो में 2 column बना रखे हैं. एक column में image है, एक column में text है. So website में क्या होता है, जो आपका content होता है वो multiple columns में arrange होता है, जैसे कि magazine और newspaper में होता है. Okay, next thing is HTML layout elements. So we have multiple elements for HTML layouts. So let's see, HTML has several semantic elements that are defined the different part of web page. So यहाँ इसकी help से हम different web pages को like different part of web pages को design कर सकते हैं because of these elements. Okay, number 1 is header. So it defines the header of the document or section. किसी भी पेज का जो head होता है वो define करता है. Next is nav, defines a container for navigation links. So एक web page में different section में scroll करके ना जाना पड़े, हम direct किसी section में जाना है तो वहाँ पहुँच जाएं. So for that we need a navigation bar. Okay, if we have a very big web page, अगर बहुत बड़ा web page है हमारा, तो हम scroll करके एक particular सेक्शन पे जाएं. सो उससे बेटर है कि हम अपना ऊपर एक nav बार बना दें जिसकी हेल्प से हम नेविगेट कर सकते हैं अपने वेब पेज पे. ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन डिफाइंस अ सेक्शन इन डॉक्यूमेंट. सो हम इससे तो मल्टीपल सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर. नेक्स्ट इज आर्टिकल बेसिकली डिफाइंस इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट आर्टिकल. सो बेसिकली इसके अंदर आप कोई भी आर्टिकल डालना चाहते हो, लाइक कोई भी टेक्स्ट डालना चाहते हो, एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट लाइक ब्लॉक. आप इसकी हेल्प से एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो. ओके,
Next is aside, define content aside from the content like sidebar. So basically जैसे साइड में आपको अलग से एक like कुछ information देनी है या कुछ content देना है, so for that you use aside tag. The last one is the footer. No, I guess it's not the last one. We have footer. It basically defines the footer of a document. So basically footer में हम mostly क्या रखते हैं, हमारे social links रखते हैं, हमारा address रखते हैं, and all of that content. Okay. And then we have details. We can also put details inside the detail section, or we can also put details in any div using any div inside the footer section or wherever we want. Then we have summary. Summary defines the heading of the element. So summary basically किसी भी element की को like define करता है हमारे लिए. Okay. The next is HTML layout techniques. Okay, next is HTML layout techniques. So we have multiple. So basically जो layout की भी मैंने बात की, जैसे मैंने आपको different जो हमने web page आपको दिखाया उसमें header था, then we have multiple navigation buttons, then we have this layout, यहाँ image होगी, यहाँ text होगा, and then यहाँ text होगा, and then यहाँ image होगी. So ये सारा हमें layout create करने के लिए different techniques की ज़रूरत होती है. So we are going to see all of those techniques to create multi-column layouts. हर technique के कुछ pros हैं, कुछ cons हैं. Okay. Number first is CSS framework. Number second is CSS float property. We are going to use this CSS float property in this project. Okay. Number third is CSS flexboxes. We can also like create something like this in flexboxes, and this is something that we are going to study in maybe next or next to next. Yeah. After one project or two project, we are going to have a dedicated project for CSS Flexbox. Okay, so that you can understand Flexbox really nicely. Okay, the next one is CSS grid. So we are going to learn each and every property with the help of a single project. ठीक है, हम हर किसी में एक project में इसको use करेंगे, so that you can get a proper understanding that how these things work. Okay, now let's talk about first technique, which is CSS framework. So they are predefined files like w3.css or bootstrap online. So online we have bootstrap, right, which we use a lot of times. We also have w3.css. So we have predefined files like this, which can be linked to your HTML file to use the classes in that file. So these classes already basically these files already have some inbuilt classes, and we can use those classes to design our page in a much nicer way. Okay. Ma'am, CSS HTML same? No, CSS and HTML are not same. Basically I guess Aditya आपने मेरी वीडियो like front end development की वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखी है, so I would request you to GeeksforGeeks playlist के सेक्शन में जाना, and playlist वाले सेक्शन में जाना GeeksforGeeks School के, and वहाँ पे जाके आप front end development for beginners की जो playlist है उसको starting से देखना. So you will there very nicely I have explained HTML, CSS and JavaScript में क्या difference होता है. Basically HTML हमारा structure देता है किसी भी पेज को, CSS उसको डिज़ाइन करता है, उसकी ब्यूटिफाई करता है, ज़्यादा अच्छा दिखाता है, एंड JS उसकी JS बेसिकली उसकी फंक्शनैलिटी इंप्रूव करता है, उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करता है. ओके, सो या now let's see CSS float layout. It is a common to do entire web layouts using CSS float property. So आप किसी भी web page को पूरी तरीके से उसका layout create कर सकते हैं just by using CSS float property. It is that powerful, and this is one property that you are going to use in this project that I will be teaching. Float is easy to learn, just you need to remember how to float and clear property works. So इसमें बहुत easy है, but आपको ये याद रखना है कि कैसे float और clear properties को आप साथ में use करते हो, so that you can create multiple sections or you can create multiple like different layouts. Okay, the disadvantage is floating elements are tied to the document flow, which may harm the flexibility. So basically what happens is कि जो हमारा document है ना, हम document के flow के हिसाब से basically जिस हिसाब से हमने images and text ऐड कर रखा है हम उसी हिसाब से float property और clear property को apply करते हैं, but इसकी वजह से ना हमारे web page की flexibility खराब होती है. Basically if you will open that web page in a mobile or in a tab, तो उसमें may be problem आ सकती है. Okay, next is CSS Flexbox Layout. Okay,
So use of flexbox ensure that elements have predictably when the page layout must accommodate different screen sizes, different display devices. So basically जब हम CSS flexboxes की बात करेंगे उसी पॉइंट पे हम वो बात करेंगे कि जब हम मोबाइल में कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वो अलग डिस्प्ले होती है एंड टैब्स में अलग होती है एंड डेस्कटॉप्स में अलग होती है, डेस्कटॉप और लैपटॉप यू कैन से अलग होती है. सो बेसिकली विन लाइक नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जब मैं CSS फ्लेक्सबॉक्स की बात करूंगी तब वहाँ पे हम ये भी सीखेंगे कि मोबाइल्स में, टैब्स में, डेस्कटॉप्स में किस तरीके से हम अलग अलग स्क्रीन साइज पे अपने पेज को चेंज करते हैं सो दैट हमारा पेज उसमें ज़्यादा अच्छे से दिखे एंड ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो. ओके, so we are going to learn that in CSS Flexbox Layout. The next is CSS Grid Layout. So let's talk about this. CSS Grid Layout module offers a grid-based layout system. So इसकी हेल्प से हम एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ ग्रिड क्रिएट कर लेते हैं. उस लाइक ग्रिड हमारा एक ग्रिड बेस्ड लेआउट सिस्टम क्रिएट हो जाता है विद रोज एंड कॉलम्स. उसमें मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स होती हैं. मेकिंग इट ईजियर टू डिजाइन वेब पेज विदाउट हैविंग द यूज ऑफ फ्लोट्स एंड पोजीशनिंग. सो इसमें हमें पोजीशनिंग या फ्लोट्स की जरूरत नहीं होती. हम बेसिकली एक ग्रिड बनाते हैं एंड हर सेल में, सेल क्या होता है बेसिकली एक रो और कॉलम जो हमारी रोज इन कॉलम्स होती हैं. तो इसका ये वाला पार्ट को मैं सेल कह सकती हूँ, ये वाले पार्ट को सेल कर सकती हूँ. बेसिकली ये जो सेल होते हैं इसमें क्या चीज़ कैसे जाएगी ये हम इसे इजीली डिसाइड कर सकते हैं. इसमें हमें मल्टीपल फ्लोट प्रॉपर्टीज और पोजिशनिंग प्रॉपर्टीज ये सब चीज़ें ध्यान रखने की, इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लोट प्रॉपर्टी एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी द सिंटैक्स ऑफ फ्लोट प्रॉपर्टी. सो द फ्लोट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ एन एलिमेंट शुड फ्लोट. फ्लोट जैसे आप बेसिकली एक इंग्लिश टर्म में समझ सकते हैं. फ्लोट मतलब फ्लोट करना, फ्लोट होके कहीं पे भी चले जाना. सो उसको हम फ्लोट कराते हैं और उसको सही जगह फिर हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ उसको पोजीशन करना है. उस हिसाब से हम उसको पोजीशन कराते हैं फ्लोट करा के बेसिकली. ओके, ना वी हैव सिंटैक्स फॉर फ्लोट. इसका वैल्यू नन हो सकती है जब हमें फ्लोट नहीं कराना. लेफ्ट हो सकती है, राइट हो सकती है, इनिशियल हो सकती है, इनहेरिट हो सकती है. ओके, सो लेफ्ट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि लेफ्ट साइड में सारा चला जाएगा. बेसिकली लेफ्ट की साइड फ्लोट होने लगेगा. बेसिकली यू कैन सी कि अगर एक ऐसे डिव है, एक ऐसे डिव है एंड एक ऐसे डिव है एंड हमारा पास एक पेज है एंड पेज इतना बड़ा है. सो व्हाट विल हैपन, हम लेफ्ट करेंगे तो ये सब कुछ लेफ्ट में चला जाएगा. सो बेसिकली ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इसमें अटैच हो जाएगा एंड ये भी इसके बाद यहाँ पे अटैच हो जाएगा जैसे हम इस प्लेस में लेंगे. ठीक है, राइट कैसे होगा, राइट ऑपोजिटली राइट क्या होगा, राइट इस तरीके से हो जाएगा कि ये सब राइट में चले जाएंगे. दैट ये बॉक्स बेसिकली राइट में चला जाएगा लंबा सा एंड देन सब चीज़ें इसके पीछे यहाँ पे लगने लगेंगी. ठीक है, इनिशियल का मतलब होता है कि जब भी आपका एक पेरेंट डिव होता है उसके अंदर एक चाइल्ड डिव होता है तो जो आपकी पेरेंट की लाइक जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी ऊपर से चली आ रही है अगर आपने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो ये वही उसी को एक्वायर कर लेगी. इनहेरिट का मतलब भी यही होता है दैट इफ़ यू हैव अ लाइक ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड उसके अंदर आपने मल्टीपल एलाइज क्रिएट किए हैं. सो अगर आपने इसको कोई फ्लोट प्रॉपर्टी दी है बट इनको फ्लोट प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं दी है तो ये लिस्ट इनहेरिट कर लेंगी ऑर्डर्ड लिस्ट के जो भी आपने प्रॉपर्टी दी है. ओके, कूल. ओके, नेक्स्ट इज after selector, basically double colon after selector. So this selector styles something after the content of each selected element. So यहाँ पे आप जो भी element select करते हो, यहाँ पे basically आप CSS declaration में जो भी आप element select करते हो उसको style something after. So उसके बाद वो styling create मतलब styling apply कर देता है. Okay, so this is the use of double colon after CSS selector. Okay, the next is clear attribute. So let's see what is clear. Clear property specifies on which side of the element floating elements are not allowed to float. So clear की हेल्प से आप ये बता सकते हो कि जब आप floating property लगा रहे हो तो किस साइड पे elements को float करना allowed नहीं है. Okay, when you applied the float property आपने बता दिया कि कहाँ float करना है, बट आप ये भी कर सकते हो that जब आपको उसको break करना होगा, जब आपने float लगाया ना आपको फ्लोट ब्रेक करना है तो आप क्या कर दोगे, आप क्लियर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको किस साइड पे एलिमेंट के फ्लोट नहीं कराना, फ्लोटिंग एलिमेंट्स नहीं चाहिए.
Okay, as you can again see, it has again syntax clear, and यहाँ पे भी none left right, both basically both side float करेगा. Basically एक ये box है and दो box यहाँ के float करने लगेंगे. So this is the case for like both side float नहीं करना चाहिए इस केस में, तो both side कुछ भी नहीं जाएगा. Initial inherit, as I already told you in the previous example, it's the same thing. Okay, now I would ask few questions to you guys quickly. Want you guys to please quickly tell me the answers. Quickly just tell me the answers in the live chat. What is layout? So basically मैं जितने भी questions पूछ रही हूँ इनके answers. So that's what I have decided from this time, that सब बच्चे जो भी मैं क्लास लूंगी जिसमें पीपीटी होंगी, आई वुड पुट फ्यू क्वेश्चंस एंड आई वुड वांट यू गाइस टू प्लीज आंसर दैट, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग चीज़ों के लिए कितनी इम्प्रूव हुई है. ओके, सो नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज लेआउट. ओके, आई वुड वांट यू गाइस टू प्लीज आंसर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन सम HTML some tags of HTML layout. So HTML layout जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उसके कुछ elements थे, कुछ tags थे. So I would want you guys to please answer that. Next is what is the tag whose position is bottom of all in HTML layout. So HTML layout में सबसे नीचे कौन सा tag आता है, that is also something I have already told. So I would want you guys to please answer this also. The last one is which is a tag whose position is top of all in HTML layout. So HTML layout में सबसे ऊपर कौन सा tag होता है. Okay. The last one is mention 4 techniques for HTML layout. So quickly tell layout क्या होता है, then HTML के different tags क्या होते हैं that helps us to create HTML layout, then कौन सा tag सबसे bottom पे होता है, then कौन सा tag HTML layout में सबसे top पे होता है, and what are the 4 techniques that we use to create HTML layout. Okay, the first answer over here is I would want you guys to please answer, and अगर आप लोग नहीं करोगे तो मैं तो बता ही दूंगी. And if you are watching this video थोड़ा late में, I would want you to please pause the video and write the answer in the comment section. I'll be more than happy to see that who all of you have answered the things in the comment section. Like आप लोगों को कितनी knowledge है and आप लोगों ने क्या क्या आंसर किया है. Okay, so HTML layout specifies a way in which web page can be arranged. So आपका web page किस तरीके पेजेस किस तरीके से अरेंज होंगे वो आपका HTML layout specify करता है. Okay, the tags like some HTML layout tags are header, nav, section, article, aside, footer. Okay, next question is which is the tag whose position is bottom of all the HTML layout. सबसे नीचे कौन सा tag होता है, footer tag होता है. Okay, which is the tag जिसकी position top पे होती है HTML layout में, header होता है. So yes, header. And the 4 techniques of HTML layout. So basically these are the 4 techniques: CSS framework, CSS float property, flexbox and grid. Okay, now next questions are what is the syntax of float. This is just a quick revision to all of you. What is HTML bookmarks? What is used to refer the href of bookmarks? So a syntax of float is float colon none left right initial or inherit. HTML bookmarks क्या होते हैं? These helps us to navigate the same page. Same page में जब हमें navigation करना होता है तो हम HTML bookmarks use करते हैं. What is used to refer the href for the bookmarks? IDs are used to refer the destination of the link. Okay, what is the syntax of float? What is double colon after? What syntax of double colon after? Syntax of clear, float versus clear. So float का syntax आप देख सकते हो. Again after का syntax CSS for after tag mentioned. Okay, आफ्टर का यूज क्या होता है? CSS फॉर आफ्टर टैग मेंशन. जो भी टैग हमने मेंशन किया है उसके आगे जो भी हम CSS अप्लाई करते हैं वो हम डिसाइड करते हैं. अगेन सिंटैक्स फॉर आफ्टर, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट आफ्टर लगाया एंड यहाँ पे जो भी CSS डिक्लेरेशन है आप देख सकते हो. सिंटैक्स फॉर क्लियर एंड देन ऑल द वैल्यूज यू ऑलरेडी नो. फ्लोट वर्सेस क्लियर. फ्लोट हमारे कोई भी कंटेंट को फ्लोट करने के लिए, क्लियर टू स्टॉप द फ्लोट. ओके, so that was the theoretical part. Now let's quickly go to the coding part. Or you can say the page part. So this is the page that we are going to create and this is the code for that page. So basically I want you guys to do one thing. The thing that I want you is to like try and write the doc type HTML and उसके अंदर HTML tag. Basically I want you to define different tags which are HTML tag, head tag, title, link, body tag and इसके अंदर header tag, and just try and make different section
and we are going to go through each and every section one by one. हम सारे sections को देखेंगे. Okay, I'm going to explain each and every section to all of you. हम ये साथ में कोड करना शुरू करेंगे कल से. From tomorrow's class we are going to like code everything together. So as you can see that in the title, मैं अभी बस इसको थोड़ा सा explain कर देती हूँ. टाइटल में हमने DC Comics page and यहाँ पे href style.css इसको ले लिया, basically लिंक कर दिया है. Then header में if you go on the page you can see that header में एक picture डली हुई है, right? Header में we have mentioned, we have basically added a picture. So that's what I have done in the code also. Inside the header we have put a image. Okay, then after this we have created a section. So this section basically is this one. Okay, can you see this section on the screen? This black section जहाँ पे मैंने this section must read collection, this section. So we have created this section to write all of this. Okay, so the next section that we have created is this section जिसमें we have created this nav bar जिसके अंदर हमने सारे elements डाले हैं that will help us to navigate throughout the page. Okay, that will help us to navigate throughout the page. Now let's go to the next thing. So yes, okay, so हमने next section बनाया. इसमें हमने इसको class दे दी top. So basically सारी class and IDs मैंने last class में पढ़ा दी हैं. हमने क्यों दी हैं that you are going to understand when I will be explaining you the CSS part. Okay, so we are going to code it together from tomorrow's class. This is just an idea मैं आपको दे रही हूँ. हम एकदम स्टार्टिंग से इसको कोड करेंगे, सो डोंट वरी. ओके, H1 में हमने मस्ट रीड कलेक्शन एंड P टैग में हमने जो भी हमें एलिमेंट देना है. नाउ देन दिस इज द नेक्स्ट क्लास. बेसिकली दिस इज div क्लास कॉमिक्स. सो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने जितने भी अपने नैव बार में बटन्स बनाए थे ना, सुपरमैन वर्सेस शैज़ाम, द जोकर, वंडर वुमेन, फॉलन एंजल, रेड हुड आउटलॉ, सो हमने ये जितने भी अपने बुकमार्क्स, बेसिकली जितने भी हमने अपने नैव बार में बटन्स बनाए ना, इनको हम बुकमार्क्स यहाँ पे क्लास देंगे क्योंकि हम इसकी हेल्प से अपने पेज को नेविगेट करेंगे. Okay, the next is the row. Then what I have done is, it's very simple. I have created multiple rows. I will take you to the web page. So after doing this, what I have done is I have created multiple rows. So if you will see this page carefully, this is one row, this is another row, and I have created two sections. One is this section and one is this section. Okay, एक ये सेक्शन है, एक ये सेक्शन है, एक ये इमेज सेक्शन है. एंड आई हैव यूज्ड फ्लोट प्रॉपर्टी. यहाँ पे फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज किया है हमने टू पुट दीज थिंग्स टुगेदर. एंड देन अगेन आई हैव यूज्ड दिस इमेज एंड दिस कंटेंट, एंड अगेन हियर आई हैव यूज्ड फ्लोट प्रॉपर्टी. एंड जस्ट सो ये हमारा जोकर फ्लोट होके यहाँ ऐड ना हो जाए, फॉर दैट आई हैव यूज क्लियर प्रॉपर्टी. यू रिमेंबर क्लियर प्रॉपर्टी, हमने क्लियर प्रॉपर्टी की भी बात की है. सो वी आर गोइंग टू सी व्हेन टुमारोज क्लास में जब भी मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊंगी, जब भी मैं स्टार्ट करूंगी विद द कोड, वी आर गोइंग टू सी फ्लोट प्रॉपर्टी, क्लियर प्रॉपर्टी. सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन बिल्डिंग द वेब पेज लाइक दिस. सो एज यू कैन सी ऑल्टरनेटिवली हमने इमेजेस एंड टेक्स्ट डाला है with the help of creating two divs and applying the float and clear properties. And last में we have created another section for footer, and here I have just simply write it created by my name Sadaf Khan, which is okay. So we are going to see how we can create a header, footer and multiple sections, and how we can apply float properties, how we can create bookmarks, how we can navigate through the page. So all of these things we are going to see, we are going to code together from tomorrow's class. I just wanted to tell you about the theoretical part of this project, so that आपको theoretically पता हो कि क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं. तो जो चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं ये सब मैं आपको explain कर चुकी हूँ. I hope किसी को doubt नहीं होगा. We are going to see all of them. So as you can see here, we have used float property. Here we have used row after. So basically we have used this also. Okay. So yeah, I guess that's it for today's class, and I'm going to see you guys in tomorrow's class. And tomorrow we are going to create the page, the main page for this whole project that you are seeing on the screen. So we are going to create this project to go together. So please be there, and 4 to 5 is the time for the live class. So please be there between 4 to 5, and we will take care of, like, we will make this project together. Okay,
That's it for today's class, and I'll see you next time. Bye bye, guys. And if you like the video, please click on the like button and share it with your friends as much as you can. And I'll see you next time. Bye.